Assalamu alaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, as you know, this is class 8 and subject is English. Today my topic is a letter and entitled Letter to Your Friend, congratulating him on his success in exams. This is lecture 29th. This is 29th lecture. Dear student, what is a letter? First of all, I will explain the letter. A letter is a written message conveyed from one person to another person through a medium. Letters can be formal and informal. Besides, a means of communication and store of information, letter writing has played a role in the reproduction of writing as an art throughout history. लेटर एक हकीकत में लिखा गया वो मैसेज है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को यानी एक शख्स दूसरे शख्स को किसी एक ज़रिए से भेजता है। ये ज़रिया अगर मोबाइल का हो तो हम इसे डिजिटल लेटर कहेंगे, लेकिन जब हम पोस्टल भेजते हैं या रिटर्न पेज पे भेजते हैं तो वो हमारा मीडियम होता है। लेटर्स कैन बी फॉर्मल, कुछ लेटर्स फॉर्मल होते हैं और कुछ इनफॉर्मल होते हैं। व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। अब लेटर्स बिसाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, वी नो दैट लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन का हिस्सा होने के साथ साथ और स्टोरेज यानी इंफॉर्मेशन का भी एक मुकम्मल स्टोरेज होने के साथ साथ लेटर जो राइटिंग है इसने बुनियादी किरदार अदा किया है लेटर को एज एन आर्ट प्रोड्यूस करवाने में, कि लेटर राइटिंग एक आर्ट के तौर पे पूरी तारीख में उभर के आया। तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। Dear student, I have defined the letter. Now I will explain the types of letter. As you know that there are two types of letters. There are basic two types of letters. First one is formal and the second one is informal. Dear student, there are a number of different types of letters. For example, audio letter, business letter, cease and desist letter, chain letters, cover letters, cross letters, etc. There are a number of letters, but we are concerned to an informal letter, the letter that is a written message conveyed from one person to another person through a medium. So the student, I will give you a sample of letter. Here this is a sample mean an example, a piece of sample जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। Here is a sample of letter. Parts or letter are displayed clearly on it. Dear student, parts of letters are clearly displayed on it. Student, you need not to learn this sample. This is a sample of letter. You need not to learn this letter. Here our concern is to understand the parts of letters. I explain the parts of letter, and this sample will display the parts of letter for our
Understanding. Let's start the parts of letter. Here, first of all, we write down the address, sender address. जो ख़त भेज रहा है उसका पता, ख़त भेजने वाले का पता हम सबसे शुरू में लिखेंगे. नेक्स्ट वी विल राइट डाउन दी डेट. डेट मीन जिस दिन ख़त लिखा गया हम वो तारीख लिखेंगे. नेक्स्ट वेन एवर वी कॉल डियर मॉम, डियर फादर, डियर मदर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, एनी वन एल्स, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन टू सैल्यूट अ पार्टिकुलर पर्सन. यहाँ पे आप मुखातिब करेंगे एक मखसूस शख्स को जिसको आप ख़त लिख रहे हैं. देन the body of the letter begins. This is the body of the letter. Body of the letter. And then whenever the body of letter is completed, we store data information and we continued our communication. Then we conclude the body. Whenever we talk to someone or to convey information, then एट दी एंड वी कंक्लूड द इंफॉर्मेशन. जब भी हम कोई बात करते हैं तो एंड पे हम उसे कंक्लूड करते हैं. सिमिलरली इन लेटर द बॉडी ऑफ द लेटर देयर इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स. कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर एग्जाम्पल पे माई रिगार्ड्स टू पापा एंड लव टू डियर आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब आप घर में दूसरे लोगों को क्या कर रहे हो, अपना सलाम पेश कर रहे हो और उन्हें अपना प्यार सलाम दुआ भेज रहे हैं. वो उस किस्से को क्या कहेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स. एट द एंड ऑफ लेटर यू मेंशन some words, for example yours sincerely, yours lovingly, are your lovingly. These are complimentary क्लोजर. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर से मुराद है कि आप अपना हवाला देते हैं, आप अपनी फीलिंग्स अटैचमेंट शो करते हैं, फीलिंग्स अपनी शो कर रहे हैं, तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. एट द एंड ऑफ द लेटर dear student, we mention signature lines. For example, we mention the name, xyz, etc, etc. These are called signature lines. Here first sender address, second one is date, third one salutation, part of the letter, concluding remarks, complimentary closure, at the end signature line. Students, here this is this, I repeated my words, this is the sample of the letter. This sample letter is presented to you just for understanding the parts of the letter. So no need to learn this sample of letter. Let's dear student, let's start the letter. Our question: write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in the exams. आप अपने दोस्त को ख़त लिखते हैं, उसे कंग्रेचुलेट मीन आप उससे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्या कंग्रेचुलेशंस पेश कर रहे हैं. आप अगर अपने दोस्त को कंग्रेचुलेटिंग मीन मुबारकबाद देना, तो आप अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं उसकी शानदार कामयाबी पर, उसे एग्ज़ाम में शानदार कामयाबी पर उसे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टेल यू दैट द सेंडर एड्रेस. एंड स्टूडेंट, note down first thing, we start the letter at right hand. The beginning of the letter is in right hand. Examination hall, then we put comma, examination hall, and put comma A B C, and we place full stop after A B and C. This is sender address. Then we write down the date September 2, 2020, full stop, September 2, 2020. Dear friend,
Dear friend, this is called salutation. Here, dear mom, and we here use dear friend. This is called salutation. Dear student, here note down one thing that the D, the first letter of dear is D, that is capital, and the second letter, second word, that is friend. In this word, first letter F is capital. Dear और फ्रेंड दोनों इनका पहला पहला लफ्ज़ कैपिटल है. वाई? इन सैल्यूटेशन whenever we call someone, we write down the name or the word in capital letter. जब हम किसी को मुखातिब करेंगे लेटर में, सैल्यूटेशन में, तो उस लफ्ज़ को कैपिटल लिखेंगे. here we call friend and we use F as capital. तो जब हमने यहाँ फ्रेंड को कॉल किया तो F कैपिटल यूज़ किया. डियर का D कैपिटल इसलिए हुआ क्योंकि ये जब भी हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये तो इसी लिहाज से हुआ. लेकिन दूसरे लफ्ज़ में F कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये सैल्यूटेशन वर्ड है. नेक्स्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. इम्तिहान में तुम्हारी कामयाबी के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. टू हियर अबाउट योर सक्सेस, तुम्हारी कामयाबी के बारे में सुनकर. इन द एग्जामिनेशन, इम्तिहानात में. यू हैव गोट वेरी गुड मार्क्स इन द क्लास 7. गॉट मीन हासिल करना, वेरी गुड मार्क्स बहुत अच्छे नंबर, इन द क्लास 7. तुमने 7वीं जमात में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं. यू हैव मेड अस फील फ़ख्र के काबिल बनाना, फ़ख्र के काबिल बनाना, मेड अस फील. यू हैव मेड अस फील प्राउड, तुमने हमें फ़ख्र करने के काबिल बना दिया है, यानी इतने अच्छे नंबर लिए हैं कि हम उस पर फ़ख्र कर रहे हैं. आई होप यू विल डू इवन बेटर इन योर नेक्स्ट क्लास. आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ. यू विल डू इवन बेटर, आप करोगे, इवन बेटर, इससे भी ज़्यादा अच्छा, इन योर नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में. यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी अगली जमात में इससे भी बेहतर नंबर लोगे. आई फॉर्मली कंग्रेचुलेट यू एंड योर पेरेंट्स ऑन दिस हैप्पी ओकेजन. मैं रस्मन ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, इस पुरमसरत मौका पर, इस खुशी के मौके पर. कंग्रेचुलेट मीन मुबारकबाद देती हूँ, यू आपको, एंड योर पेरेंट्स और आपके वालिदैन को. मैं रस्मन इस पुरमसरत मौका पर तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को मुबारकबाद देती हूँ. योर्स सिंसियरली XYZ. दिस इज़ द closing remarks and we can say that this is complimentary closure and signature lines. Here at the end of the letter we use complimentary signatures. Complimentary signatures are yours, yours sincerely. This is called complimentary closure. Complimentary closure is yours sincerely and signature line is XYZ. Dear student, as this is very easy letter. This is a very easy letter. I hope you have understand it. Now it's time to note down the diary. Learn and write letter on your notebook. Learn and write letter on your notebook. Thanks for watching this video. See you later with a new topic. Till then, Allah Hafiz.